Hello everyone. So I am Siddharth Mehta and I have today with me Dev Shanker. Dev has secured All India rank 12 in CLAT 24 exam. The result just came out and Dev is currently student of class 12th in Rishabh Public School, New Delhi. So I will like to welcome Dev और आज हम देव से थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि how he has prepared for his CLAT exam, how he has managed his boards and class 12th. Of course boards abhi hue nahi hai, but then class 12th ki padhai and CLAT exam, and what inspired him first at the first place to become a lawyer. So welcome Dev. Good afternoon, sir. Yeah. So Dev, let me ask you these. The first thing that is in my mind is जब वो ऑल इंडिया रैंक 12 देखा तो what was the feeling like? सर एक्चुअली आई डिड नॉट बिलीव इट। अब मेरे को लगा कि सर आगे 3 जीरो मिसिंग है या पहले बीच में कोई जीरो है। मेरे को मतलब विश्वास ही नहीं हुआ सर कि 1 2 ही लिखा हुआ है। सो इट वाज समथिंग व्हिच वाज मतलब आई कुड नॉट कॉन्सेप्चुअलाइज इट कि आई वुड गेट अ डबल डिजिट रैंक। Oh, okay. Right. So what was the feeling at home, and what did your parents tell, and how is the mahol at home right now? So, sir, when the result came, actually, I was outside with my friend. So, I was at the petrol pump with him. So, my sister called me and she told me that your result has come. So, I opened it Mm. on the website and then I saw that it was AI at 12. So, I showed it to my friend. He also did not believe it. So, I bought some sweets. I went to my house. I took my parents' blessings. Then I called my teachers at Career Launcher, who played such an invaluable role in determining my success. Um, I think it was them who, induced this. You can say induced this self assurance in me that I can clear this exam. Okay. Okay. So you celebrated the success, the initial moment of the success with your near and dear ones, right? Yes, So with my अभी parents वो as well. सिंक इन हो गया ना, अब तो वो बिलीव आ गया ना कि you are all India rank 12. Now the Yes, counseling process is started and everything is started. yes, sir. Yeah, let us talk about how did it all begin. From when did you decide that you will pursue career in law, and what was that trigger, if there was any trigger कि करना चाहिए law, ये reason है उसका. Sir, so the first and the primary reason for pursuing law was I wanted to serve my country, not as in by getting into the exact field of law, because so my main aim is to become a politician. So if I see successful politicians, they are lawyers. Like if you see good politicians, they are generally lawyers. So my father told me that if you want to enter this field, I think you should pursue law. So I said, yeah, this looks like a good thing. So I decided to get into this. Oh goodness, so you have a lot of clarity. I mean, usually at this age, people do not have clarity of what they want to be at this age of 35, 40, 45. So that's great. So in all likelihood, you will be going to analyst Bangalore. I mean, Yes, not all likelihood, it depends upon your preference. Is that your first preference? NLS Bangalore. Great. So let us talk about your preparation part a bit. So you started your journey with Career Launcher, I think almost 2 years back, roughly Yes, 2 years back, when you were in class 11. yes. So the CLAT exam primarily is based on reading. Okay, so if you are not a good reader, you will not perform well in this exam. So were you a reader since your childhood कि वो CLAT की preparation के वजह से बना? I used to read some books. मतलब मैं थोड़ी बहुत किताबें ऐसे पढ़ लेता था। मतलब फिर लॉकडाउन में छोड़ दिया था किताबें वगैरह पढ़ना। फिर जब क्लैट की जर्नी शुरू हुई तब फिर न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। So when you started your preparation, so initially what happens with many students is that uh, they struggle to figure out from where to begin. मतलब they attend the classes, teachers tell them, but when they go back home, they struggle to figure out कि चालू कहाँ से करूँ, preparation कैसे start करूँ, और उस phase में ना बहुत से students को problem होता है. Dev, I will like to know from you. How to overcome that initial phase का confusion. What did you do when you started your coaching? How did you prepare yourself in the first few months?
सर फर्स्ट फ्यू मंथ्स में तो थोड़ी बहुत मतलब दिक्कत तो ऑब्वियसली रहती है, मतलब चीज़ें तो समझ नहीं आती है। बट मैंने कई सारे अपने टीचर्स को भी कंसल्ट किया इस बारे में कि आप मुझे गाइड करो, और उनने बहुत अच्छी तरह से मेरे को चीज़ें बताई भी। तो उसने, और फिर उस तरह से फिर मैं आगे इस चीज़ से मैं आगे बढ़ सका, और मैंने जैसे जो डर रहता है इनिशियली, उससे मैं आगे निकल गया। और जो टीचर्स ने जो बोला था करने को अच्छी तरह से, मैंने बस उसी को फॉलो किया, और फिर वो फियर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। So important thing for the students to note here is that you need a mentor. So and that mentor can be anyone. I mean, you यस। need somebody जिस पे तुम trust कर सको और उसकी बात को follow कर सको, because that will help you to overcome the initial confusion. So for example, teachers might have told you कि editorials पढ़ो regularly. If यस। I'm not wrong, that या। is some one of the most common thing that every CLAT mentor will say. तो वो editorials पढ़ना चालू करो, and they what happens is that students get bored after few days कि editorials में क्यों पढ़ रहा हूँ, because CLAT exam is an exam which you know you will not be able to see output on day to day basis. So for example, जेई का अगर एग्जाम है तो मैंने अगर मैथ्स के 5 प्रॉब्लम बना लिए, फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम बना लिए, कॉन्सेप्ट कर लिया क्लियर, तो मेरे को लगता है आई हैव डन समथिंग। बट एज सच इन क्लैट वी कैन नॉट क्वांटिफाई कि ये कॉन्सेप्ट है, दीज मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस इज वन बिग प्रॉब्लम और अ बिग इशू दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या कि क्या पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बस करते जा रहा हूँ, मैं बस एडिटोरियल पढ़ते जा रहा हूँ, जीके इट्स एंडलेस, तो कैसे इन चीजों को तुमने ओवरकम किया? सर मतलब कि जैसे कि आपने बोला कि कई काफ़ी समय के बाद आदमी भी थक जाता है ऐसे करते करते। मतलब सर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? इफ यू स्टॉप इन द मिडल, इट्स नॉट गोइंग टू बेयर फ्रूट। तो मतलब मैंने बोला कि चलो करते हैं, लेट्स सी, इफ नथिंग हैपेंस वील हैव अ प्लान बी। बट मैंने सोचा कि चलो करते हैं, बिकॉज एडिटोरियल्स पढ़ लेता था, दैट वाज नॉट अ बिग डील। एंड जीके, सो जीके वाज एंडलेस, टू बी ऑनेस्ट, एज यू सेड, जीके इज एंडलेस। तो जीके में जैसे कि जो मंथन्स मिलते हैं करियर लॉन्चर के, वो मतलब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और जो डेली जीके भी आती थी, मैं उसको भी पढ़ लेता था। तो मंथन्स हो गए, जीके हो गए, फिर मंथली जो एक राउंड अप आता था वो भी, फिर जो मास्टर स्ट्रोक सेशंस होते थे उनसे। तो इन सब चीज़ों से मैं जीके हो जाता था, तो मेरे को जीके में ज़्यादा डरने की चीज़ें भी नहीं आती थी। और वैसे अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसमें भी कुछ नॉलेज मिल जाती थी जीके से। If I talk about the all the CLAT section, you have talked about GK, you prepared from master stroke and Manthan. What about the other sections? उसमें कोई ऐसा सेक्शन था क्या जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता था या मतलब वीक लगता था? सर लॉजिकल रीजनिंग यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें थोड़ा सा मेरे को मतलब मेरे मार्क्स कम आते थे मॉक में। मतलब 11-12 ऐसे ही मार्क्स आते थे मेरे 25 में से। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता था हमेशा। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया? व्हाट डिड यू डू टू इम्प्रूव दैट? सर मैं मतलब डाउट सेशंस में हमेशा जाता था। तो मेरे कई सारे दोस्त थे, तो वो डाउट सेशंस को जनरली अवॉइड करते थे। तो मैं चले जाता था, मैं अकेले रह जाता वहाँ पर। तो फिर 1-to-1 सेशंस में मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेता था। फिर स्ट्रैटेजीज बताते थे जो टीचर्स, मैं उसको फॉलो करता था, और फिर धीरे धीरे लॉजिकल में भी चीज़ें सही हो गई। So, though the students, this is a big lesson. I mean, look how simple this thing is that टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। डाउट सेशन विच आर परहैप्स मोस्ट अंडर यूटिलाइज सेशन दैट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर, अंडर यूटिलाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट मेनी स्टूडेंट्स टर्न अप, दे कीप देयर डाउट्स टू देमसेल्फ एंड दे गॉट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वेयर ही सेड दैट कि डाउट सेशन में कभी टीचर अकेले और स्टूडेंट अकेला, तो उसके तो डाउट और कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे ही होंगे। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इफ दीज आर अवेलेबल टू यू। सो देव, we talked about logical reasoning. How comfortable are you in mathematics? सर मैथमेटिक्स तो The मतलब quant मेरे पास है ही, 11th-12th में मैं कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम में हूँ। तो वो भी हेल्प कर ही देता है, और मैथ्स में तो वैसे मेरे को ईजी लगता था, मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए थे इस बार एग्जाम में मैथ्स। Okay, great. So, Dev, how many mocks you must have taken? I mean, in this 2 year period, कितने mocks वगैरह दिया होगा आपने? कोई tentative idea? सर अराउंड 40 जो करियर लॉन्चर ने दिए थे, अराउंड 40। Around 40. Okay. So, many students they hesitate taking mocks. मतलब they believe that it is a judgment on their own self. They do not want to evaluate their performance. But what are your views on this? How important are mocks? सर मॉक्स आर दी फाउंडिंग स्टोन ऑफ योर, मतलब सर वो मॉक्स आपकी बेस बनाते हैं आपके एग्जाम की। अगर आप मॉक्स में बैठना सीख जाओगे
तब एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं मॉक्स लेता था, जैसे कि मॉक की टाइमिंग होती थी 2 से 4 या 2:30 से 4:30, तो उस टाइम में अगर मैं बैठ गया तो फिर एग्जाम में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती थी। शुरू शुरू में सर मॉक्स में नंबर कम आते हैं, वो एक फैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने मॉक्स को एनालाइज करोगे, उन चीज़ों पे वर्क करोगे, तो फिर आपके मॉक स्कोर्स भी बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो इससे आपका एग्जाम में भी फिर जो फियर रहता है वो भी चले जाता है। Okay, right. So, and how did you analyze your mocks? You talked about कि उसको थोड़ा सा देखना analysis. So, what was your idea behind the analysis? कोई method था उसमें? So if the questions were wrong, so I would see that 1, 2, 3 these questions are wrong. I would go and ask my teachers, why did I do this mistake? और फिर वो बताते थे कि आपको ऐसे करना था इसमें. So they would tell me other different strategies to attempt these kind of questions, like strengthening, weakening questions में दिक्कत आती थी काफ़ी ज़्यादा. तो उसमें मुझे keywords को पकड़ना पैसेज के अंदर, उन सारी चीज़ों में हेल्प करा उनने बहुत ज़्यादा. तो फिर वैसे भी मैंने इन चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट किया. मैथ्स में अगर कोई गलती होती थी सर, तो फिर मैं आंसर की में देख लेता था कि कैसे रहता है इसका सॉल्यूशन, और फिर उसको सॉल्व कर देता था. और जीके तो सर वो तो गलत हो ही जाता है कुछ समय में, लेकिन फिर वो इम्प्रूव कर सकता है. Alright. Okay, was there any period जब तुम prepare कर रहे थे तो कुछ कुछ ऐसा period कभी आया क्या when you felt demotivated that or you felt like कि maybe you will not be able to clear the CLAT exam? या देयर वर मेनी सच मोमेंट्स वेयर आई थॉट कि मतलब अब आगे नहीं होगा इससे. बट मैंने सोचा कि व्हाट विल हैपन इफ आई लीव इट इन बिटवीन. मतलब मैंने यही मेंटालिटी रखी थी कि मैं अगर इसको बीच में छोड़ दूंगा तो क्या होगा. मेरे मेरे अपने मेरी जो मेंटालिटी है वो और वीक होते जाएगी अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा. विल सी. मतलब मैं अपना काम करूंगा और फिर रिजल्ट जैसा भी आएगा मैं करूंगा. मतलब मेरे को अपने काम पे फोकस करना है. आई शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट. दैट वाज माय माइंडसेट. Great. So ये जो तुमने philosophy you talked about that you worried more about your process and the work. And is it some teachers told you, or is it like the environment in your family, your parents? Because this is very important, and at your age, there has to be someone who must have guided you on these things. So, tell me about the help that people gave you, your parents, your teachers, your friends. So actually, this what was there, what I talked about. So this is a shlok from the Gita, from the Bhagavad Gita, where Shri Krishna tells Arjun that तुम फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो. So that was what my father told me कि यार तुम फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो. अगर तुम्हारे कर्म ही ठीक होंगे, मतलब तुम्हारा जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें ठीक से करते जा रहा हूँ पूरी प्रोसेस विदाउट एनी फेल, तो फिर मेरा रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छा आएगा. अगर मैं उसमें चीटिंग करूंगा बीच में ही तो फिर वो गलत जाएगा. और ऑफ कोर्स टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें. मतलब उनने हमेशा अपने लिमिट से आगे पुश करना सिखाया था. और उनने बताया था कि कैसे हम अपने काम पे ही फोकस करें. वी शुड नॉट ऑलवेज वरी अबाउट द रिजल्ट. हाँ, हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना चाहिए रिजल्ट के बारे में, बट ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए. मतलब कि हम अपना काम करें और फिर हमारा रिजल्ट आए. Beautiful, beautiful. I think following this philosophy also helps to calm you down during those 2 hours of the exam. मतलब remembering Yes. that you have focused on the process, outcome is beyond your control. Um, right, Dave. So I will like to ask you one more question, and what do you feel is you did differently from the others? You must have seen there were several students in your batch, and few might have been definitely more talented than you are, or you thought that okay, these guys are really sharp. But what do you feel you did differently from others? और ऐसा होता है कि कई बार बैच में ना कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं, और वो शायद तुम करे हो जो तुम्हारे फेवर में काम करी हो. तो कैन यू जस्ट इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड कि हाँ ये वाली चीज यू डिड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स एंड दैट वर्कड इन योर फेवर, इफ यू हैव समथिंग ऑफ दैट सक्सेस मंत्र यू कैन शेयर परहैप्स. यस सर. सो सर जो क्लासेस होती थी, क्लासेस में तो हम सब जाते हैं सर, बट क्लासेस में बैठ के हम कर क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है. मतलब मैं अगर क्लास में जाके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू द टीचर्स, तो वो अल्टीमेटली सही होगा. लेकिन मैं क्लास में जाके अलग चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो फिर शायद वो मेरे को उतना हेल्प ना करे.
तो फिर जैसे क्लासेस होती थी, शीट्स मिलती थी हमें क्लासेस के बाद, तो मैं वो शीट्स को सॉल्व करता था, उसमें जो डाउट्स आते थे फिर वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखता था। और हमेशा एक ही होता है सर, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मैंने करी थी, मतलब मैं 2 से 4 तो बैठता ही बैठता था पढ़ने के लिए। और फिर उसके अलावा भी मैं पढ़ाई करता था, मतलब सिर्फ आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लासेस, बट क्लासेस बट द क्लासेस हेल्प मी अ लॉट इन डिटरमाइनिंग माई रिजल्ट। ग्रेट। सो ये जो तुम अभी आखिरी में बोले कि सेल्फ स्टडी, लगभग कितने घंटे यू मस्ट बी गिविंग टू योर सेल्फ स्टडी एवरी डे? आई एम सर श्योर इट लगभग, वेरी, 11th में कम देते होगे, 12th में ज्यादा, एंड टुवर्ड्स क्लैट और ज्यादा, बट इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3 मंथ्स? सर लास्ट 3 मंथ्स में तो मेरा पूरा फोकस क्लैट पे ही शिफ्ट हो गया था। मैंने ट्वेल्थ की झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ट्वेल्थ की पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। मैंने बोला कि पहले ये कर लेते हैं, फिर क्योंकि बोर्ड्स में भी समय रहता है, तो फिर मैंने ये किया। मैं लगभग सर एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ लेता था, मतलब 2 2 घंटे की मॉक्स और फिर अलग अलग चीज़ें। My goodness, that's great. So that means around 8 to 10 hours of preparation. The important thing for all the class 12th students to understand what Dave is saying is कि, और वो उसने इसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि क्लास 12th के लिए तो टाइम रहेगा, which we also believe that after 3rd December, if you count, क्लास 12th का तो टाइम टेबल ही अभी आया है, people still have 3 months time, and if you can devote 7 to 8 hours every day, then even 12th boards you will do well, right? Yes, Dev. So one final thing from your side, if you want to give the message to your, the aspirants who will be taking CLAT next year, so what will be your message to them? I mean, just summary of. I know that we can summarize whatever you say, but if one or two things that they should keep in mind, what will be that? सर एज आई सेड बिफोर, हमें अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए। वी शुड नॉट बी फोकसिंग अ लॉट ऑन द रिजल्ट, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकंड इज़ दैट believe in yourself. If you don't believe in yourself, I think it's not possible to crack any it's not possible to do anything in life. If you start believing in yourself, it's the key, it's the key for success. And yeah, always focus on what you are doing and not the result. Dave, it has been wonderful talking to you. Thank you so much. And I really wish that you become a great politician, and maybe 25 years down the line, we all see you in the, national arena of politics. So thank you so much. Thank you, sir.